Welcome everyone. Welcome to today's session. So in today's session, it is going to be completely a strategy session, and we are going to have some very practical discussion on how to prepare for the exams. So now we need to have balance two things basically. So whenever you are preparing for an exam, you always need to balance two things at once. Number one is that how to prepare for an upcoming exam. So let's say you decided to prepare for CSIR net, which is in more or less in 2 months. So you can say it is in 2 months. So you only have 2 months for preparation. So many of you might think that, okay, it is very less time to prepare for CSI net in 2 months. And for GATE and other exams, there are 3 to 4 months. So this is not enough time to prepare. So usually the student are stuck between the dilemma. So should they prepare in detail? For example, they should take some course, and in that course they should watch all the lectures, which will take about 4 to 5 or 6 months. So should they do that? Okay, so one side we said that prepare for long term, like 6 months or more than that, 6 months or more than that. And on the other hand, prepare for an upcoming exam, which is about 2 to 3 months. So this confusion always remains there, and how to balance it. So the idea is that you should always prepare for upcoming exam, but making sure that your preparation is in a way that it is also building something for a long term. Your short term preparation should always build the base for the long term physics career. So hence it is not like that you every day you are waking up and you are just memorizing some 10 formulas, and based on those 10 formulas you are solving 3 to 4 PYQs, and that's all, right? So you should always have, when you are preparing for short term, you should always be in a way that the concepts of physics are getting better, and when the concepts of physics are getting better, it is also helping you in long term, right? Now how do we prepare in today's time, right? For example, let's say I want to prepare for next 2 months. uh, what should be my preparation strategy? That is the main question here. Okay, so in order to understand that, you first need to understand the exam of CSI net as such, right? So CSI net exam you need to understand. So CSI net exam, everyone knows, is more or less three sections are there. General aptitude is there, and you also have uh, physics is there. So what is required for CSIR net? If you are a if you want to ask me, what is that one barrier which is there, which differentiate between person who qualifies the exam and person who do not qualifies the exam? Okay, so there is always one barrier, right? So let's first understand CSIR net exam first of all. CSIR net exam. CSIR net exam. So CSIR net exam has part A. Now I have met many students who says that they never attempt part A. They do not attempt part A, and they do score very less in part A. Whoever is scoring less in part A is definitely not going to qualify this exam. 100%. If you are not good in part A, it means you are not a good physics student. I don't think so yet that you are a good physics student if you are not good in part A. What is good in part A means that maximum you can get 30 marks, at least you should get 20 marks. Ideally you should get 25 marks, but theek hai, in an exam if you make some silly mistakes or something happens, at least 20 marks should be there out of 13 part. And if you're finding it very difficult to do, it means basically you're finding it very difficult to perform in part A. It means somehow you are doing gratification in physics rather than having a pure logical or a reasoning based mind. So having a logical and reasoning based mind is very important. So always understand your brain. Is your brain made for science aptitude or for social sciences? Some people are very good in social sciences. So if you're good in social sciences and then you are studying physics, it is more or less, I have seen some people, I know that they are good in social sciences like history, polity, they will do much better. But they are in the physics career for some reasons, and what they're doing with physics is basically theory, without reasoning and without basically logical aptitude.
So first of all, you should check yourself with part A. Part A is a very good reflection. Are you even made for physics or not? So in initial time, you should try to, how do we prepare for part A? Part A preparation is also very important, right? Even though you are very good in reasoning, still you need to prepare for part A. So how do we prepare for part A? Part A preparation is very simple. Okay. So always begin with part A preparation. I mean, it is one of the easiest way and you can begin, right? So part A, how much time you should give in an exam? So you should give at least 40 minutes in an exam. Okay. So in 40 minutes, you can score 20 to 25 marks. Now, many students give very less time to part A, 20, 30 minutes only, or they look at the part A in the end. No. Whenever you enter in the exam hall, always start from part A because first thing first, they are the simple questions. They are easy questions. They are general knowledge questions, right? Not knowledge, general science questions. For example, they need reasoning. They need logic, right? So always begin with part A. No matter who tells you any other strategy, I don't think any other strategy is good in this. Never start with physics because for physics, you don't have enough time. Even if I give you 10 hours for CSIR net exam, you cannot solve every physics problem in even 10 hours. So it is better that you balance that in less time, try to score more marks. So if you give 40 minutes to part A, you can easily score 25 plus. I can say even you can score perfect 30. Part A is something you can score perfect 30. Okay, so you should always aim for perfect 30. Perfect 30. Okay, so there will be how many questions will be there? There will be 20 questions and you have to do 15 questions. So 5 questions you can leave. So you have option to leave 5 questions. So if any question you think you are not able to understand, you can leave that question. But only 15 questions you have to attempt. And every question gives you 2 marks, right? So every question gives you 2 marks. So 15 into 2 will going to give you 30 marks. So you can score perfect 30. There is no problem. And take time. Take 40 minutes. If you want even more, take 45 minutes. No problem at all. 45 minutes. Take good time because you're scoring 30 marks. If you're not scoring 30 marks and then taking 45 minutes, that is a problem. Okay, so if you're not solving a question for at a one question you're stuck for too much time, that is a problem. Don't do that. But if you think that you can do 15 questions but you need 45 minutes, do it. Perfectly fine, do it. So that is the first strategy. Now, how do you prepare it? So every day, for at least 4 or 5 days before your exam, at least 4 or 5 days from now on till your exam, pick up the PYQ, right? Pick up the PYQ and set a timer of 45 minutes. Sit down, set a timer of 45 minutes. In general aptitude, the most important is, are you able to do the question in a time pressure? That is the whole idea. Do not give the full mock test. Just give the mock test for part A. Last 5 papers, take the PYQ, right? And just every day one, set up the timer for 45 minutes, do the questions. Do the questions. And whatever question you are not able to solve, look at the chat GPT, look at the solution and get it done. Okay. Chat GPT can solve your all part A questions very easily because they are very easy questions. Okay. So that is the number one idea. How do I prepare? Last 5 papers. I will take 45 minutes of test, 45 minutes of what I can say is timer, and I will do the questions. Try to score perfect 30. You will not be able to do perfect 30. You will always see that 1 or 2 questions are getting wrong. Means you are, and because of the silly mistake. Always have it happened with me also. I did very perfectly part A, but still I got 2 questions wrong because of the silly mistake. Both time. First time I was not qualified, second time I was qualified. Both time the same thing happened, but more or less you will be able to understand it. Okay. So even 25 marks you are getting is enough. If I assume that 2 questions you do wrong and there is also negative marking, okay, 25 marks you should get in the final exam. Always begin from here. Physics is very much after that. Physics will come too much after that. If you're not scoring 25 marks here, then everything is lost. The first battle is lost. Okay. Now, part B. Now, part B is the one thing that people give too much time for too less. I mean, part B is basically too much time people give in an exam, but for too less.
Part B is basically they are going to ask you 25 questions and you only need to do 20. And every question is 3.5 marks. So total you can get is 70 marks. Okay, 70 marks. More or less why I'm starting the session from here, because from my own experience, maximum number of the times the student who are not able to qualify CSIR net is because they do not understand the pattern. They do not understand the art of giving the exam rather than physics. People don't even know that how to give an exam. That is why they are failing again and again. CSIR net is something like they have given you so difficult things and you just have to find out easy for you and just get out. Pick up easy and get out. Until unless you don't know how the talent of picking up easy from the difficult and get out, then you cannot qualify CSIR. You can qualify any other exam, but not this. This exam basically need you to be pick and throw. Pick some things, throw other. Okay. So 70 marks. Okay. So how many subjects? So now let me be an open session. You can unmute, you can message, whatever. How many subjects are there in part B? In part B, let's see how much you know. How many subjects are there in part B? What do you think? Physics subjects. Yeah. How many subjects are there in part B? इतना तो पता होगा. Syllabus wise you know. Okay, what is the first subject? What is the first subject? What is the first subject? Mathematical physics. Okay, perfect. Then second, classical mechanics. Okay, third, EMT. Okay, number fourth, quantum mechanics. Perfect. Then we can say statistical mechanics and thermodynamics is also the part of it. ठीक है. And classical mechanics के साथ optics or you can say EMT के साथ optics is also the part of it. ठीक है. And classical mechanics के साथ relativity is also the part of it, which is usually taught separately in an colleges, but it is a part of the syllabus. ठीक है. And then sixth number is electronics. Any subject I'm leaving out, anything you think is there either implicitly or explicitly in an exam? Implicitly or explicitly? Solid state physics पूछ सकते हैं part B में. Usually they ask in part C. They can indirectly ask you in part B also, but part C में usually they are asking. ठीक है. So there are 6 subjects. Okay, there are 6 subjects, and now if you pick up the last 5-year paper, you will find out that they have very evenly distributed the questions in these 6 parts. So if they are asking you 25 questions, it means at least they are asking 4 questions from each and at max 5. Okay. So there will be some subject in which only 3 questions will be there, and there will be some subjects in which there will be 5 questions there. So at least 3 questions will be there from each subject, and at max 5 questions will be there from each. Okay. So this is going to be very evenly distributed. CSIR net exam is always very evenly distributed. They balance out very nicely. Okay. So if you calculate the total number of marks asked from each subject, it is very evenly distributed. Little bit up and down is there because you cannot divide 25 in 6 anyway. So someone has to be bigger than other. So that is the number one thing. So there are, अब करना क्या है? What we have to do? So if I even imagine that there are 5 to 6 topics in each subject, मतलब there are 5 chapters, 5 chapters. ऐसा ही है लगभग if you see on an average there are 5 chapters, 5 chapters from each, then it means there are at least 30 to 40 chapters which are needed to be done in order to complete the syllabus. Up, let's think about the chapters. Some have more chapters. I think let's have 6 chapter on an average, because 6 chapter to hai. So 6 into 6, almost 36 chapters are there. Now what are chapters in mathematical? For example, some examples of chapters. For example, mathematics, if you see, complex analysis is a chapter, Fourier is a chapter, differential equation is a chapter, right? So in this way, there are six to seven chapters. In classical mechanics, 5 to 6 chapters. EMT, 5 to 6 chapters.
some subjects even have more chapters, some have even 10 chapters. ठीक है. Chapter means a book chapter. If you open up a book, it will be covered in one chapter. So in mathematics, you open up HK Das in one chapter, it will be covered. Complex analysis in one chapter will be covered. ठीक है. For differential equation in one chapter, it will be covered. 30 to 40 chapters. Now the problem here is again, what is the preparation strategy of a student? Okay, so what is the preparation strategy? Number one problem. So what is the number one problem? So number one problem is every session is new beginning. Every session is a new beginning. So today this session is being conducted. So for many of you, you are here for a new beginning. So you are here for, okay, आज से start. Okay, so is it your first day of physics? You are doing physics from class 11, then class 12, then 3 year of BSc, 2 year of MSc, then after MSc. So this is not definitely not your first day. So this is not a new beginning. So stop thinking of every day as a new beginning. Day can be a new beginning, but this is not a new beginning of physics. So first, I want you to do something is have a tracker. Have a tracker. Number one. Number one. ठीक है, let me tell you what is tracker. So tracker will take you 2 days at least to make. So what is a tracker is today you go pick up all the notebooks which are there uh, in your room. So you are staying in hostel, you are staying in you in your family home, whatever, wherever you are staying in your room, there will be many notebooks which you have made. No notes which are you have printed. You printed something and you never studied is not your notes. So remove them. Any notes you have ever studied in your life, any book you have ever studied. I'm saying in last 5 years you ever studied. Ever. In last 3 years you ever studied. So first take a notebook, some clean sheet of paper, and take out all the notebooks you have and start making a tracker. Okay, so how do I make a tracker? Mathematical physics. ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स. अभी मैंने नोटबुक खोला एंड इन माय नोटबुक, ओपन अप योर नोटबुक. ओके, आई हैव स्टडीड मैट्रिसेस. तो लिखो अपने ट्रैकर में, यू राइट आई हैव स्टडीड मैट्रिसेस, आई हैव द नोट्स ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, मैट्रिसेस का व्हाट इज देयर. सो ओपन नोटबुक, वेरी क्विकली सी व्हाट हैव यू डन इन द मैट्रिसेस. ठीक है, तो मैट्रिसेस का आई हैव मेड द नोट्स. अब ये नोट्स आपने कहाँ से बनाए थे? From where you have made these notes? So let's say you have made these notes from physics by RN lectures. ठीक है, तो आपने मेरे लेक्चर से, लेट्स से आपने ये नोट्स बनाए थे एनी टाइम बिफोर, और आपने ये कोचिंग के जो है नोट्स को पढ़ के ये नोट्स बनाए थे, और दिस बुक यू हैव स्टडीड एंड दैट्स हाउ यू हैव मेड द नोट्स थे. ओके, देन इन दिस नोटबुक यू हैव आल्सो सॉल्व्ड सम पीवाईक्यूज. ओके, आपने कौन से पीवाईक्यूज किए हुए इस नोटबुक में जो बोल रहा है? जस्ट बी अ spectator, don't use any brain in this. Okay, whatever is in there in front of you, just do that very sharply, I'm telling you. Okay, until unless you learn to connect your present with the past and then think about the future, that is the only way for success. If you think that, okay, let's forget about the past, today is a new beginning, then after 10 days again you will forget these 10 days, then there will be another new beginning. No, connect with the past, think in the present, थिंकिंग अबाउट द गुड फ्यूचर. ठीक है, दैट इज हाउ वी हैव टू बी. पीवाईक्यू किसके पीवाईक्यू किए हैं? ओके, ठीक है, मैंने गेट के पीवाईक्यू किए हैं फॉर जैम और लेट्स से फॉर नेट. ठीक है, सो यू राइट डाउन, देन नोटबुक पलटो, देन मे बी मैट्रिसेस के साथ साथ यू हैव आल्सो डन डिफरेंशियल, देन मे बी यू आल्सो हैव डन सम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. हर किसी के पास, everyone in this meeting might have some notebooks. ऐसा तो नहीं है you are not born yesterday and today you are starting physics. Everyone has notebooks. And if you don't have any notebook accessible to, don't try to reach out to those. ऐसा भी नहीं है कि you are thinking about that notebook which is not there with you at this moment. जो नहीं है वो गया. Whatever is not there with you right now, let it be. Whatever is there with you right now is important. ठीक है, so make with all the topics. So mathematical, classical mechanics, so on so forth.
ठीक है. So now you have an idea, rough idea, कि what you have ever studied and what you have never studied. ठीक है. What you have ever studied, ever, any time before in the past you have ever studied, and something which you have never studied. ठीक है. And every day, every single day has to be the mix of both. It should be the revision of something which you have ever studied, and it should be the learning of something which you never studied. Okay, so you need to revise these things and you need to learn these things. But the problem happens is that why you never studied this, because every time you learn this in a new way rather than revising it. So every time a student learn the same things again and again rather than never studying it, never revising it in a proper manner. Revision is much more important than learning the same thing again and again. So we have to avoid that. We will never, whatever is in my notebook, I will not make the notes of it again. Okay. I will now redo the things on the same notes. Have a stapler in your hand, have a A4 sheets in your hand, and in the same notebook now start playing around. Start playing around. Okay. Okay. अभी हाउ डू आई स्टडी, अब मुझे स्टडी स्टार्ट करनी है. अब मैंने क्या किया, आई मेड अ ट्रैकर, आई नो दैट दीज आर द थिंग्स आई हैव एवर स्टडीड. मेरे को एक आइडिया हो गया कि दीज आर द थिंग्स हैं जो मेरे पास. मैं अगर मैं इफ आई rather than watching the new lecture of some new coaching institute, or rather than reading a new book about it, or rather than doing anything else, if I revise my own notes, I will very quickly be able to complete this topic. ठीक है. तो ये आपको समझना है. चलिए अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे. नाउ हाउ डू आई स्टडी दिस. ओके, पहले यहीं पे आते हैं, पहले यहीं पे आते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग, स्टॉप द बैरियर ऑफ सब्जेक्ट. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट. ठीक है. Second important. So now the moment you have made the tracker, you realize that I am not a beginner, I am actually in the middle of preparation. Okay. And now this tracker is continuous. This tracker is continuous. So let's say tomorrow you studied something new. Let's say you studied a new topic, you made the notes of it, so the tracker will get updated. So you have to update your tracker. Okay, phase shift topic I never studied, scattering theory I never studied, so today I studied it, so write it. Also, let's say you do the pyq of something. Okay, so let's say matrices, you did the pyq of net of last 3 years, which you never did before. So you have not done, you have studied matrices before ever in your life, but you have never did the PYQ of CSIR net of last 3 years of matrices. So now if you do that, you go and update in your tracker in front of matrices that last 3 year PYQs of CSIR net. So tracker will get updated. You can make this tracker on Excel or on pen and paper, whatever you want, you can do that. But choose one and don't get confused too much. Okay? Second thing is very important. Subjects are not important. Topics are important. Okay. Now the students, how do students prepare most of the time? Okay, mathematical physics, so pura mathematical will get completed first. Then they will move to classical mechanics. Then they will move to quantum mechanics. I usually don't think that this ever works. The reason being because it gives you unnecessary pressure. So let's say I'm studying mathematical. If I need to complete mathematical, I need 10 days to complete mathematical. Now, for 10 consecutive days, when you're studying mathematical, the classical mechanics, the electronics, the quantum mechanics, all other subjects are shouting at you that you are behind them. And then you do the calculation that if I have to do 9 subjects, multiply by 10, 90 days, but the exam is after 60 days. So if you are doing one subject complete first, you can never complete anything. Never try to complete anything. The problem starts arising when you start to do complete the things. Complete. When you try to complete big things, the problem arises. Everyone can complete small things. You can never complete big things. That is a problem. So subject is a very big thing to complete. Mathematical physics in itself is a very huge thing to complete. Complex analysis is also very huge to complete.
In today's time, the kind of focus you and me have with thanks to social media is very bad. Is very bad. Let's accept it. We are how we are lying to each other. Let's accept it. We cannot complete a subject by staying focused. We cannot complete a chapter by remaining focused. So let's not try to complete them. First of all, let's not try to complete. करना ही नहीं है पूरा, तो एक साइड में करना ही नहीं है, तो एक छोटा सा चंक वी हैव टू कंप्लीट सब वी एक छोटा मतलब एनीथिंग विच कैन बी कंप्लीटेड इन 3-4 आवर्स, बस ऐसा ऐसे ऐसे टारगेट होने चाहिए कि 3-4 आवर्स में कंप्लीट एंड आउट. I complete something in 3-4 hours and I am out. And then move to next thing. Study capsule type रहनी चाहिए rather than a very big thing. So subject, topics, and I would even say subtopics. That is the best and best thing you can do. ठीक है? Now in subtopics, here is also an interesting thing. In subtopics, you will see that something is conventional. Something is, you can say, application, and something is really hard. So, for example, take an example of special theory of relativity. Conventional means the questions which are coming on direct formula basis. Direct formula लगाएंगे आपका question आ जाएगा. Application means that formulas are same, but you need to just use some brain, right? Uh, right, some brain. Okay. So, and last is hard. Something is extremely hard. Extremely hard basically means that सच में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया था उस टॉपिक के ऊपर. इफ यू लुक एट इट, द क्वेश्चन वाज एक्चुअली हार्ड. इफ यू आर स्टडिंग, नेवर फोकस ऑन दिस. नेवर. कोई so that is the why we are not able to complete things, because the last step of completion is do these hard things which is not possible. आप हर टॉपिक की these hard things नहीं कर पाएंगे. You will not be able to do these hard things. ठीक है? तो यू कैन डू कन्वेंशनल, यू कैन डू एप्लीकेशन थोड़ा बहुत. यू द फॉर्म एक होता है डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ गया. ठीक है? कन्वेंशनल में क्या होता है कि यू कैन ऑल्सो से पीवाईक्यू बेस्ड. मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम तो नहीं बट मोर देन 30% क्वेश्चन आर कन्वेंशन. ऐसा ही पीवाईक्यू आया होगा और अगेन पीवाईक्यू इज बिफोर एंड द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. कन्वेंशनल होता है. एप्लीकेशन में क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में नहीं है. The question is not in PYQ. You have never seen such PYQ. I will even show you the example. But the question was actually if you use little bit of formula, which is a conventional knowledge, with your own brain, that you can do. Hard is something that you use your brain, you use your PYQ, even then you use ChatGPT. The question will not be very easy. Even if the ChatGPT give you answer, you will not be able to understand the answer. Okay, let's take an example. I want to really give you an example. Okay. So what do you think about this question? You tell me, you divide this question into conventional, application, and hard. So the question is something like, in a rest frame, a source emits a light. So this is a rest frame and this is an observer frame. Observer frame means there is some observer which is moving towards the source. So it is coming like this. The speed of the observer is closest to. So what do you think in these questions? So मतलब कि if you are a stationary person, you think, you see that okay, this is x, this is y, and this is 45. And now you start moving in this direction. Start moving this direction. So what will happen? Yeah. What is the basic concept of, very basic concept of special theory of relativity? What is one basic concept you can tell? क्या होगा? One, what is the most basic concept of special theory of relativity? क्या पढ़ते हैं आप जैम में? जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़े? ओके. ये एक तो हो गया टॉपिक. सब टॉपिक मुझे बताओ. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, यही है ना? So when you are moving along x-axis, the length contraction will happen along x-axis or y-axis. Length contraction होगी x-axis में होगी, y-axis में होगी, क्या होगा? If you are moving along x-axis, so will length contraction happen along y-axis?
विल लेंथ कॉन्ट्रेक्शन हैपेंस अलोंग वाई एक्सिस, ऐसा हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? जितने जिसको भी जो याद आ रहा है यू कैन गिव एन आंसर. नो. नो. सो इट मीन्स वाई विल रिमेन वाई, लेकिन ये जो x है, नाउ दिस हैज बिकेम x डैश. सो कैन यू फाइंड दिस x डैश यूजिंग द कन्वेंशनल नॉलेज, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के? कैन वी फाइंड दिस? सो क्या होगा फॉर्मूला? x डैश विल बी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो न्यू लेंथ इज, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी या लेंथ बढ़ जाएगी? इस केस में लेंथ बढ़ी है या कम हुई है? इंक्रीज हुई है लेंथ या डिक्रीज हुई है लेंथ? एक्स एक्सिस इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज? एंगल छोटा हो गया ना, एंगल छोटा होने क्यों हुआ होगा? क्योंकि एक्स बड़ा किया है, वाई उतना ही रखा. सो यू हैव केप्ट द वाई सेम बट एक्स यू हैव इंक्रीज्ड. दैट इज वाई व्हाट हैज हैपेंड इज इंक्रीज. तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अब बताइए मुझे. यहाँ पे क्या करें? ये करें क्या? ये इज इट करेक्ट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग बताइए बस. सिर्फ राइट एंड रॉन्ग बताइए. रॉन्ग. ऊपर जाना चाहिए. सोच लीजिए, बड़ा बड़ा ध्यान से सोच. ऊपर जाना चाहिए. ये जो ब्रैकेट में है इसको ऊपर लेके जाना चाहिए. सोचो भाई. इट इज एक्चुअली करेक्ट. थिंक अबाउट इट. यही तो कन्वेंशनल फिर कंसेप्ट सही नहीं है ना. इट इज एक्चुअली करेक्ट. थिंक अबाउट इट. ये चीज जो होती है ना, दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन 1. यस, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1. तो ये जो है, ये जो पूरी चीज है वो ग्रेटर देन 1 होगी. ओके. तभी तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें लेंथ बड़ी है. चलो एग्जांपल ले लो. लेट्स से दिस v इज इक्वल टू 0.8 c. टेक एन एग्जांपल. ठीक है. तो 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर क्या होगा? जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन है ना, एग्जांपल लेके करके देख लो. यही सब करना होता है एग्जाम में. 1 माइनस क्या होगा? 0.36 सी. ठीक है. ओनली 0.36. अभी आई नो दैट एक्स डैश इज ग्रेटर देन एक्स. ये मुझे पता है. यहाँ पे लेंथ मेरी इंक्रीज हुई है एंड यहाँ पे मेरी लेंथ एक्स ही है. सो माई लेंथ हैज इंक्रीज्ड. सो आई नो एक्स डैश इज ग्रेटर देन एक्स. तो इफ एक्स डैश इज ग्रेटर देन एक्स, तो आप बताओ 0.36 से मल्टीप्लाई करूंगा या 0.36 से डिवाइड करूंगा? नाउ यू टेल मी. शुड आई डिवाइड और मल्टीप्लाई? टेल मी एवरीवन. अब तो जिन्होंने पहले रॉन्ग बोला था, आर यू नाउ एग्रीइंग विद मी और यू आर नॉट एग्रीइंग विद मी? 0.36 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स डैश फिर एक्स से बड़ा कैसे हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बेसिकली मीन्स दैट आप बोल रहे हो कि एक्स डैश इसका सिर्फ 36% है. बट एक्स डैश तो एक्स से बड़ा है ना मेरे दोस्त. सो दैट इज वाई यू हैव टू डिवाइड. ये तो बेसिक है, इतना तो पता रहना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द ओनली केस. एक्स डैश इज, अब लास्ट स्टेप रह गया इस क्वेश्चन में. ओनली द लास्ट स्टेप इज देयर. द लास्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन इज, आपके पास y है, आपके पास x है, तो पहले tan थीटा करेंगे. tan थीटा. सो पहले tan थीटा करेंगे तो व्हाट विल बी द y बाय x. एंड इफ यू अगेन डू द tan थीटा, सो पहले tan थीटा कितना है? tan 45. अब tan कितना है? tan 30. तो अभी क्या करेंगे? y तो सेम रहा, x डैश हो गया. ठीक है. नाउ यू डिवाइड. सो यू डिवाइड, सो यू डू tan 45 बाय tan 30. सो यू गेट x डैश बाय x. और x डैश बाय x अगर आप यहां से ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0.36. ठीक है. तो 0.36 नहीं आएगा एक्चुअल में, ये आएगा 1 - v² बाय c², क्योंकि वो तो मैंने एग्जांपल लिया था ना. तो वो आ जाएगा 1 - v² बाय c². अब इसको सॉल्व कर लो. यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ tan 45, यू पुट द वैल्यू ऑफ tan 30. सॉल्व इट. ठीक है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक भी फॉर्मूला, मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई रिवाइज ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक, तो मुझे एक भी फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं था. ठीक है. तो मुझे ये भी नहीं याद था कि आई डिड नॉट इवन रिमेम्बर कि नीचे आना चाहिए या ऊपर आना चाहिए. यू जस्ट यूज अ लॉजिक. लॉजिक क्या है कि यहाँ पर लेंथ जो है एक्स है और यहाँ पर लेंथ एक्स डैश है. वाई विल रिमेन सेम. वाई विल रिमेन सेम? बिकॉज यू आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस.
If you're moving along x-axis, it basically means the length along y-axis will remain same. और आपका जो x-axis का लेंथ है, that only will change, और वो इंक्रीज होगा तभी तो एंगल छोटा होगा ना, इंक्रीज होगा, क्योंकि y उतना ही रखना है और एंगल छोटा करना है तो x को इंक्रीज करना. It means x dash is greater than x. It means when I am writing the formula, I have to divide 1 minus v square by c square, because ये चीज हमेशा लेस देन 1 होती है. तो ये जो था क्वेश्चन हार्ड नहीं था, and this question was not easy also, not conventional also. It was basically application. So application basically means ki the formulas were simple, no fancy formula was used. Hard also does not means ki something very tricky is been involved, but how your brain is able to use the simple formulas in order to do the application question. ठीक है? Okay, this was an application based question. Okay, let's do one more question. Let's think about one more question. ठीक है? So let me do something which is actually okay. What about this 55 number question? Where will you categorize this? I'm just teaching you something here. Very important. I'm teaching you. Exam today. I'm not. अगर आपको एग्जाम देने का तरीका आ गया तो that is everything. Where will you categorize? Just read the question. So binding energy per nucleon दिया है for x, for y. This is given. And what is the energy released in a symmetric fission? Basically, x goes to y plus y. So is this question किस कैटेगरी में आता है? न्यूक्लियर नहीं पढ़ा है क्या किसी ने? नहीं पढ़ा है तो इट्स सेपरेट. If anyone has ever studied nuclear physics, ever, जिसने अगर पिछले this I think even if you have done jam PYQ, if you have even done jam, अगर आपने you have never studied nuclear is okay, then it is okay. But if you have ever done jam PYQ, you know that this is one of the easiest question you can ever expect. All you have to do is PYQ. It's very nothing. You read this question. If you have even done jam PYQ, CSIR net PYQ, that's all. ये हो गया. It's an easy question. ठीक है? So this is an easy question. ठीक है? Okay. What about this question? 67. So in this case, they have said that the magnetic field at the center is something. And in this case, they have said that magnetic field in the center will be what? So in this case, the magnetic field at the center is B naught. So in this case, what is the magnetic field at the center? So if okay, I first want to know your answer and then I will give you my answer. What do you think about this question? Application, okay. But when you say application, is the application coming to your mind? Is the algorithm clear in your mind? It is application only if for someone it can be application, means for someone algorithm came to your mind, okay, I will solve this question in this way. But if that logic is not coming in your mind, okay, someone says have to revise. Okay, you tell me which formula you need, I will give you the formula. The question is easy or application only if you need formula. I give you the formula. But if I give you the formula, can you solve this question? Or do you have actually you have something to ask me? कि sir ये formula दे दो. How many of you have here says कि sir give me this formula, I will give you the answer. Is there anyone? Is it yes or no for you? You tell me. If it is yes means if I give you the formula you can solve. No means even if I give you 10 formula you cannot solve. So tell me yes or no. What is it for you? I just want to know the public opinion before I make my opinion. What do you say? Is it concept नहीं है इसमें कुछ. Concept है ही नहीं.
No concept is. So it is actually hard question. So this is a kind of question CSIR net ask you ki, okay, the formula which is being used in this is actually from class 11th, 12th. But this question is so hard that you cannot directly solve it. Basically, you have to find a symmetry argument. And I am doing it from Monday. I am not able to find that symmetry argument. Ki how, matlab, if I solve this question using the formula, it will go very lengthy. But if I solve this question using some symmetry argument, ki okay, इसमें ये है तो इसमें ये है, तो in that way, this question could be easier. But I am not able to get that algorithm. So for me, it is not application. For me, it is application only if I am able to find that algorithm. कि okay, okay, ये formula है, ये algorithm है. If I apply this algorithm, I will be able to answer. Maybe I forget the formula that I need to revise. वो अलग बात है. ठीक है. तो but in that case also I should exactly know कि for which thing I need the formula. ठीक है. For some people, this question could be application. For example, उनको ये symmetry argument दिख गया. They are better than me in this. So they see that okay, this is an algorithm. ठीक है. If you see the algorithm, if you are able to see the symmetry, I'm not able to see the symmetry, you are able to see the symmetry, ठीक है, आपके लिए application based. Now, this is all I want to tell you. This is all I wanted to show you with an examples. Show you with an examples. अब एक और example देता हूँ. एक और example. Last example. Last example. What about this question? Is it simple, easy, medium, मतलब conventional, application or hard? Hard. Okay. Easy. Okay. Everyone try to give your answer because more people give an answer, more better it is for you. ठीक है, आपको ज्यादा पता चलेगा. Don't hesitate. What is your feeling with this question? I'm not asking you to give your right answer. I'm asking you to give your feeling on this question. Okay. If someone has not studied the topic, उसके लिए ये question hard दिख सकता है. But if someone has done DJ Griffith का chapter, if someone has studied DJ Griffith chapter number 5 or I think 6, chapter 5 or 6 में है. So even if you have done the examples of the DJ Griffiths chapter, this question is actually very easy. I think it is one of the example of that book. One of the example. I have not seen the book from a long time, but I think this is chapter 6 example. Yes, and you can imagine I have studied this book. I during my 2 year back when I was teaching that book, when I was recording the lectures, जो कि अभी course में आपको available है. So it's a direct example, right? So this comes under easy. So now when you are preparing, what should be your idea? What should be your idea? What most of the people do and what you should do, that has to be differentiated. That is what I'm here to tell you. What people are doing and what people should be doing. So what you are doing is that for the topics which you know, जो टॉपिक आपको आते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लेट्स से these topics you know, for those topics you are so much busy in hard questions. For example, I know magnetism, so I wasted yesterday evening in that box question and even till now I don't know the answer. Okay, but that is because of my personal satisfaction. But if I am preparing and if I'm not able to solve that question for 5 to 6 minutes while I'm preparing, it means the question belong to the hard category of the topic I know. Don't do it. Don't do it while preparation. Don't think that your preparation will get sharpened with this. Don't sharpen your preparation like that. But instead, what you should be doing, that the topics that you don't know, you do not know, you should be doing first easy, or you can say conventional, then application based questions of that. Okay, first conventional and then application based question.
for the topics that you don't know. Okay, for the topics that you don't know, right? So that is the idea we have. So now in part B, in part B, all you need to do is 15 to 20 topics or 20 around topics you need to do 20 chapters of different book. You don't need to complete any book. You don't need to complete any subject entirely. All you need to do is there are 6 subjects, 3 topics from one subject, 3 topics from another, three 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 from another. तो 3 3 3 करके 18 हो गए. Now there might be some favorite subjects, तो एक दो और उठा लो वहां से. Or there might be some more visible questions, like in last 3 year paper you are seeing similar kind of questions more. तो उनको थोड़ा उठा लिया और थोड़ा सा 3 4 more topics. This should be an idea. और वो 3 topics कौन से होने चाहिए? How, what should be those 3 topics? How do we decide what are those 3 topics which I need to do for this subject? For example, you say write down mathematical physics. Mathematical physics. Which should be the 3 topics you should do? So how do I decide it? Last 5 papers, लास्ट 5 पेपर जो CSIR नेट के हुए, पिक अप दोस पेपर. आप मैथमेटिकल के क्वेश्चन जल्दी से स्कैन करो. यू स्कैन वेरी क्विकली. यू रियलाइज कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन एवरी ईयर इज कमिंग. कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन, मोर देन वन क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्स. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स should be the first topic. Then you see differential equation is coming from last 1 or 2 papers. Okay, differential topic should be second. Then you see matrices usually comes. Every year matrices question is definitely there. So matrices is my third topic. Then you see that special function questions are coming. Okay, so special function questions can be the fourth topic. Okay, अगर आपको fourth करना ही है तो. So then you do the topic. Now when you start doing the topic, अब मैंने डिसाइड किया कि इन मैथमेटिकल फिजिक्स I'm going to do my first topic, which is complex analysis. Now I have to ask myself first question. I have to go my tracker. I have to go to my tracker. No, last 5 year nahi. I said last 5 papers. I did not say last 5 years. Last 5 paper. ठीक है. तो whatever are the last 5 papers is the only 5 paper. 5 paper, which basically means is 75 questions multiplied by 5. ठीक है. अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो 55 क्वेश्चंस out of 50. It is almost 275 question, which is too much. The database of 275 question is too much. So 275 questions का database आप लेकर चलेंगे. So now I decided to study complex analysis. First I will go to my tracker कि is it there in my tracker? क्या मैंने complex analysis कभी पहले पढ़ा है? Have I ever studied complex analysis ever before? So if not, then you need some coaching. At that point you need coaching. ठीक है. So आप जल्दी से कुछ lectures देखें पहले. आपके पास जो भी लेक्चर्स हैं, इफ यू डोंट हैव अ लेक्चर यू कैन टेक फिजिक्स बाय आर इन ऑल इन वन कोर्स. उसमें आपको क्या है कि यू विल गेट लेक्चर्स 3 4 5 लेक्चर जल्दी जल्दी. माय इन माय कोर्स यू विल गेट कन्वेंशनल नॉलेज वेरी फास्ट. सो इन माय कोर्स you will never get hard. Very rarely you will ever see that I have discussed the hard part of it, but you will get conventional knowledge faster than anything. I don't have a longer lectures. I do not have two lengthy lectures as such. I have a conventional knowledge which a student need in a very quick way, and it will always, you will always remember that what are the things I need to keep in mind for this topic. Okay. So for complex analysis you watch 4 or 5 classes, or let's say 4 to 5 hour of lectures. So because you have never studied complex before, it means you need to spend some time. So you need to spend 4 or 5 hours of lectures. Always avoid those things in which there are some, I don't want to take any name or as such, but if you have some free lectures in which there are 20 hours just for complex analysis, it will reduce your chances of qualifying. Okay? Always have a balance, that even if you are watching lectures, it should not be more than 7 8 hours. Someone has taken 8 hours, okay, but 20 hours for one topic is too much. Okay? So then don't avoid those things. Again, some people also get motivated and open HK Das. Now HK Das is a
120-page chapter only for complex analysis, and then they start doing everything, every solved example, every unsolved example. वो भी पागलपन है. That is also, so too much of self study, too much of lecture, both are harmful. Your goal is to acquire all the conventional knowledge in a very quick way. Conventional knowledge, you understand कि okay, complex analysis है, you are unaware about this topic, so how you need to understand conventional knowledge. So someone has to come, or some book has to come, which tells you, okay, this is poles, this is how you find poles, this is how you find singularities, this is how you check the order, and then this is how you find residues, this is how you apply Cauchy residue theorem, this is how you solve trigonometry questions, this is how you solve real functions questions, and then this is how you solve the 0 to infinity questions, how this is how you solve minus infinity to infinity question, and these are the basically the PYQs. ठीक है, every topic along with the examples of PYQ is a conventional knowledge. So your goal is to very quickly cover the conventional knowledge first, and whatever question you feel is hard, don't waste too much time on it. Complex analysis means there are many questions which are very hard. It can take you even one day just to complete that question, but do you need to? No. ठीक है, in this paper itself there are two questions of complex. One is very hard, another is conventional, means PYQ based. One is difficult. So if I'm going with the knowledge of complex analysis, I will just do the conventional question, I will leave the hard question. Why will I be doing it? ठीक है, so आपका conventional knowledge cover हो गया. And then as such PYQ is involved only last 5 papers. इससे ज्यादा आपको अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी है. यू डोंट हैव अ टाइम फॉर दैट. You don't have a time for that. तो लास्ट 5 पेपर में जो भी आपका क्वेश्चंस PYQ whatever is being there, you do it. ठीक है, उसके अलावा if you want, then you don't do practice, that will come in revision. ठीक है, जब आप रिवाइज करेंगे then the questions will come. But in order to complete topic completion happens when you have a conventional knowledge of that topic plus the last 5 papers के PYQ. कॉम्प्लेक्स के आखिरी 5 पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं, द मोमेंट यू हैव सॉल्व्ड देम and moment that you have a conventional knowledge of complex analysis, your topic is done for the time being. Then you go to second topic, then you go to third topic. In this way you should do. Now let's say first topic you did complex analysis, second topic you can do harmonic oscillator, quantum mechanics में harmonic पे चले जाओ. ठीक है, थर्ड टॉपिक में आप कहीं और चले जाओ, देन यू गो टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन मैग्नेटिज्म में चले जाओ. ठीक है, ओके. नाउ हियर is very important. I need to mention some books. So whenever you are in trouble for mathematical physics, always go to HK Das book. Whenever you are in trouble for classical mechanics, always go for JC Upadhyay book. Whenever you are in trouble in electromagnetism, there is no better book than Griffiths in the whole world. Then whenever you are in trouble, or whenever you want to learn for electronics, always go to VK Mehta book for conventional knowledge. This book is not very good for advanced levels, but for conventional knowledge, VK Mehta do a good job, pretty decent job. Or instead of VK Mehta, you can even follow all about electronics YouTube video lectures. Okay? YouTube is best for electronics because electronics many times is trickier. So electronics के लिए you can always go there. Then what I'm leaving here, then fourth क्या आएगा इसके अलावा, मैथमेटिक्स हो गया, then classical mechanics, electromagnetism, quantum mechanics के लिए you can always go for Griffiths is my favorite, because once you know how to study Griffiths ना, then quantum mechanics के लिए भी जो है Griffiths जो है is a good book. But whenever you open a book, never open the book from chapter 1. Open the book from the topic you want to study. Remember that you want to study harmonic oscillator. So open the book from harmonic oscillator page. Don't open the book from the first page. Don't complete the books. Don't complete the subjects. Don't complete the syllabus. Just complete the topics. You complete. Okay. In next 60 days, you cannot complete the syllabus. But in next 60 days, you can complete 40 topics. नहीं? So 40, 30 topics. You complete 30 topics, you will qualify CSIR net. You complete 30 topics. Okay. How 30 topics can make you qualify CSIR net? देखो 30 topics में से मान लेते हैं कि सिर्फ 20 ही एग्जाम में आए, सभी थोड़ी आ जाएंगे. Let's say only you did. However, if you will do the topics which are asked in last 5 years,
more than 25 topics will come in exam, because ऐसा नहीं होगा ना complex नहीं आएगा, complex आएगा. This will not happen, matrices is not going to come, matrices will come. So let's say only 20 topics come, let's say worst case scenario only 20 topics came. Someone was saying that, sir, numerical method did not came in last year. Okay, ठीक है, because last paper was so easy, they did not ask so many difficult question in part C. Part C was very easy last year, last paper. So 20 question came. Let's say 12 topics were in part B and only 8 topics were in part C. You have to divide yourself, okay? आप ऐसा नहीं कि आपने सारे टॉपिक पार्ट बी के कर लिए, पार्ट सी का कुछ किया ही नहीं. ओनली 8 एंड 8 इंटू 5 40 एंड 3 इंटू 5 कितना हो गया ये? 35 इंटू 42 82. और 20 मार्क्स भी अगर मैं यहाँ से जोड़ दूं पार्ट ए का लाकर तो 102 मार्क्स हो जाते हैं. यू क्वालिफाई द एग्जाम. और इससे ज्यादा ही आएंगे. 30 टॉपिक्स तो यू विल कवर. कुछ तो पढ़ा भी होगा, समथिंग तो यू माइट हैव स्टडीड आल्सो ना बाय नाउ. कुछ रिवाइज भी तो करोगे कुछ, राइट? सिक्स्थ, समवन इज आस्किंग फॉर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स. देखिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए माय फेवरेट बुक, थर्मो के लिए माय फेवरेट बुक इज सिंगेज फॉर क्लास 11th. सिंगेज आती है क्लास 11th के लिए, वेरी गुड बुक. डोंट कंप्लीट द एंटायर बुक. पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू बेस के ऊपर आपको जो भी चाहिए उस बुक में अवेलेबल है. So let's say you need to study first law of thermodynamics, it is available. You need to study entropy, it is available. You need to study something. And then for statistical mechanics, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक है. You can combine सत्यप्रकाश and पथारिया. पथारिया is very good for canonical ensemble. I think canonical ensemble के लिए बीच में, पथारिया के बीच में पता क्या होता है? The problem in पथारिया book is कि in middle बीच में जाकर बहुत ही डिफिकल्ट बातें बोलनी शुरू कर देता है. समथिंग, शिफ्ट दोस पेजेस एंड गो टू दोस पेजेस वेयर मैथमेटिक्स हैज बीन डन. पथारिया में, कैनोनिकल इंसेंबल में, गो टू दोस पेजेस वेयर थर्मोडायनेमिकल रेसिपी समथिंग काइंड ऑफ दे उन्होंने लिखा होगा पथारिया सर ने. ओनली दैट पार्ट वेयर दे हैव, और उनको मैंने एग्जैक्टली लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है. आई थिंक अगर स्टैट मैक के यू वॉच द लेक्चर, दैट इज गोइंग टू बी इनफ इन इटसेल्फ. बट वो, और पीवाईक्यू, बट मैनी क्वेश्चन लाइक आइजिंग मॉडल एंड इन सब के लिए बुक नहीं चाहिए. इन सब के लिए सिर्फ पीवाईक्यू की अच्छी से प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो एकदम सेम सेम कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं वट एवर हैज बीन आस्क्ड इन पीवाईक्यू. सत्यप्रकाश भी कहीं कहीं काम आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल सत्यप्रकाश इज हेल्पफुल इन some cases where you need some more numerical practice, more examples, or more Indian language where you need Satya Prakash can be used. ठीक है. बट ऑलवेज रिमेंबर स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक बैरियर होता है विच यूजुअली इज ब्रेकन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लेक्चर्स. तो मेरा भी जो है आईआईटी दिल्ली में देयर वाज वन मैम who have once taught us that statistical mechanics. After that, my barrier was broken, and I have also use those notes which IIT Delhi madam gave me in my lectures also, because that was a barrier breaker for me. So that kind of, but that somehow those lectures are from Patharia, indirectly or directly from Patharia. But Patharia mein beech mein very complicated they teach, so skip that. So the idea for next 60 days is to complete 30 to 40 topics. Bas. And when you're doing the topic, you need to make sure that conventional is ready and application is ready. Hard, I'm not going to touch. Okay? Hard, I'm not going to touch. So now, how you can do it more and more. So let's say you did topic 1, topic 2, topic 3. ऐसे you are continuing doing. ठीक है. So now, do not, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू आर चूजिंग अ टॉपिक शुड कम फ्रॉम पीवाईक्यू. लास्ट 5 पेपर्स में एटलीस्ट 3 पेपर में तो वो क्वेश्चन आया हो. In last 5 papers, if in 3 or 4 papers that question is there, matrices का क्वेश्चन अगर उन 5 में से 3 पेपर्स में है तो you will choose matrices. Central forces अगर 5 में से 3 में है तो you will choose central force. And now you're doing central force. First of all, you need to check in कि आपके रूम में जितनी भी नोटबुक्स पड़ी है कहीं पे सेंट्रल फोर्स लिखा तो नहीं है. इज इट इन योर ट्रैकर? तो है तो पहले तो उसको जल्दी से रिवाइज करो.
एक छोटा सा पेजेस ले लो, रिवाइज करते हुए शॉर्ट नोट्स, यू मेक अ शॉर्ट नोट्स वेरी क्विकली, बना लिया। इससे क्या होगा कि आपको दोबारा पढ़ने का टेंशन नहीं रहेगा। ओके, अदर देन दैट इफ यू हैव सम नोट्स विच यू थिंक कि ओके आई वांट टू, कई बार होता है ना नोटबुक में लिखा रहता है कि ये मैंने इस बुक से पढ़ा है या जो भी, क्विकली रिवाइज दैट बुक ऑल्सो और कम क्विकली रिवाइज दो नोट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, सो क्लास स्लाइड्स को जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लिया। लेट्स से द फर्स्ट टॉपिक वाज द पार्ट ऑफ योर ट्रैकर, मतलब आपने पहले कभी पढ़ा था, टॉपिक 2 भी आपके ट्रैकर का है, ठीक है, तो जिस टॉपिक 3 चूज करो कि विच इज न्यू टॉपिक। अदरवाइज क्या हो रहा है ना कि यू आर जस्ट रिवाइजिंग व्हाट यू नो, अदर यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू। और टॉपिक 3 व्हेन यू गो, ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर समथिंग न्यू टॉपिक, उसको आप फिर लेक्चर देखो, उसके फिर आप बुक पढ़ो, एक ही चैप्टर जैसे मैग्नेटिज्म, अगर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात, सो इट इज ऑल अबाउट दिस वन चैप्टर ऑफ ग्रिफिथ्स। तो अगर आप एक चैप्टर ग्रिफिथ्स का कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सीधा हो जाता है, डायरेक्टली आपका हो जाता है, बट इस चैप्टर को कोई करके नहीं जाता है, नो वन डू दिस चैप्टर, ठीक, दैट इज वाई उन्होंने ये पूछा, एंड दैट इज वाई बहुत से लोगों के लिए ये क्वेश्चन मुश्किल, ठीक। नेक्स्ट थिंग इफ द क्वेश्चन ऐसा आप चल आप ऐसा कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट, अब आप जब ये कर रहे हैं तो आपको को बंद कब करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो कि अब मेरे को ये टॉपिक छोड़ देना है, अब करते ही नहीं रहना है मुझे। तो द मोमेंट यू रिवाइज द बेसिक फॉर्मूलास, द मोमेंट यू डू द लास्ट 5 पेपर्स, 5 पेपर्स में 5 ही क्वेश्चन होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन। The moment you have done 5 questions and you realize that in 5 questions से related whatever formulas were there, I know that formulas now. My notebook has those formulas now, and whatever is coming in my mind ki okay this I should do or this I should revise is done, I will leave this to, I will not have any new exercise, I will not have any new assignment, I will not have any new anything, any PYQ or so on. For now I will move to the next topic, ठीक है। Topic 2 is done, topic 3 then you learn, then whenever you are learning new topic it will take 2 days, these kind of topics will take 1 day, but these kind of topics will take 2 days or maybe 3 days, because this is new for you, you need to read the entire chapter, watch lecture, everything and so on, 2 से 3 दिन लगेंगे, but it will be a good asset because last 5 पेपर में 3 से ज्यादा बार ये आ चुका है, तो it has to be important, ठीक है। और जब भी आप टॉपिक को स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज ट्राई टू लुक फर्स्ट इन योर बुक, लोकेट इट इन योर बुक। अगर आपको बुक में वो मिल सकता है कि आपकी बेसिक स्टैंडर्ड बुक में अगर दैट इज अवेलेबल, इफ यू कैन सी दैट, लोकेट दैट, मिलता जुलता उससे कुछ भी, वर्डिंग टू वर्डिंग समथिंग, तो इट इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, आप उसको लोकेट करें। इफ यू कैन नॉट लोकेट देन इट माइट बी वेरी हार्ड, बट 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन को तो लोकेट करो, ट्राई टू लोकेट, आपको पता रहे कि फॉर दिस टॉपिक दिस चैप्टर हैज टू बी डन एंड आई एम नाउ गोइंग टू वॉच द लेक्चर और वट एवर और रीड दिस बुक चैप्टर, कंप्लीट करो। हाँ, when you are when you keep on going, let's say topic 4, topic 5, then it is a good idea to come back, I mean in topics के ऊपर। and how do you come back, there is a very fancy way to come back। fancy way क्या है, गेट के 5 पेपर्स, लास्ट 5 पेपर्स ऑफ गेट, ठीक है, तो अभी आपके पास पेपर है, आपके पास पीडीएफ इज ओपन, तो नाउ यू हैव डन कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स फाइंड आउट करो जल्दी से। तो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आया कुछ भी गेट में, अब ऐसा होगा कि लास्ट 5 पेपर में 5 क्वेश्चन आए कॉम्प्लेक्स के, 3 आपसे हो गए, 2 नहीं हुए। नाउ लेट्स सी इफ दोस 2 क्वेश्चंस कैन टीच यू समथिंग न्यू। नाउ यू सी यू कैन कंप्लीट दिस चंक्स यू कैन कंप्लीट, मतलब आप इतना तो कर सकते हैं ना कि 5 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स यू कैन डू, तो दिस विल बी डन इन 2 आवर्स। बट अगर मैं आपको बोलूं कि नाउ यू डू कॉम्प्लेक्स, तो अभी कॉम्प्लेक्स का टॉपिक तभी खत्म होगा जब फर्स्ट यू विल वॉच लेक्चर, देन यू विल डू पीवाईक्यू ऑफ नेट, देन यू विल डू पीवाईक्यू ऑफ गेट, देन यू विल डू असाइनमेंट, तब जाकर आपका कॉम्प्लेक्स खत्म होगा। दिस कॉम्प्लेक्स विल टेक यू 5 डेज, 5 डेज अगर आपने कॉम्प्लेक्स पे लगा दिए तो देन यू आर लॉस्ट इन योर प्रिपरेशन, यू आर लॉस्ट इन योर प्रिपरेशन की कॉम्प्लेक्स आता है बट बाकी कुछ भी नहीं आता है, तो दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग टेंस्ड, ठीक है। ट्राई टू स्टार्ट एंड क्लोज द टॉपिक वेरी सून, मेक इट इन अ चंक फॉर्म, मेक इट इन अ चंक फॉर्म, कि
नोट्स पढ़े, बुक जल्दी से पढ़ ली, या फिर मेरे जो लेक्चर है जल्दी से देख लिया, और very fast quickly you go to fast 5 questions of CSR net, topic close, next topic, topic close, next topic. And then someday, instead of starting the new topic, last 5 papers of gate, उनमें से ये जो 4 टॉपिक्स में से क्वेश्चंस है, सो लेट्स से फर्स्ट एग्जाम वाज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का था, एंड सेकंड वाज यू कैन से EM waves, और द थर्ड वाज हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड द फोर्थ वाज कैनोनिकल ensemble. तो इन चारों टॉपिक में से तो गेट में क्वेश्चन होंगे, एवरी ईयर द गेट इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज 4 टॉपिक, तो आपको काफी 10-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे. तो इन दैट डे यू डू दिस 10-20 क्वेश्चंस, एंड देन यू ऐड ऑन टू योर नोट्स, जो आपके ऑलरेडी आपने रिवाइज किए बनाए आपके जो भी है, और अपने ट्रैकर में भी ऐड करो कि गेट लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन डन. ठीक है, इस टॉपिक के मैंने गेट के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन भी डन. जब भी आपका रिवीजन करने का मन करे ना, जब भी वेन एवर यू फील लाइक रिवाइजिंग, ऐसा उठा लेना है. गेट, अब CSR नेट लास्ट 5 पेपर उठाए थे, ओके, उससे पहले वाले 5 पेपर, राइट. लेकिन मैं आई विल ऑलवेज से कि CSR नेट लास्ट 5 पेपर उठाए हैं, तो सेकंड थिंग शुड बी गेट के लास्ट 5 पेपर रेदर देन उस CSR नेट के बहुत पुराने पेपर, बिकॉज पैटर्न्स आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग. तो जो गेट में फॉलो हो रहा है नेट में भी उससे मिलता जुलता थिंग्स आर गोइंग ऑन. So it is always better to do things, because in last 2-3 years you will see that magnetism is increasing in both gate as well as in net. उससे पहले मैग्नेटिज्म का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता था, अब मैग्नेटिज्म इज आस्क्ड अगेन अ लॉट. तो ये एक बेटर आइडिया है. एंड पार्ट बी कर रहे हैं, देन कम टू पार्ट सी. अब जैसे 4 टॉपिक आपने पार्ट बी के कर लिए, तो कुछ टॉपिक आप पार्ट सी के करो, देन कुछ पार्ट सी के मोर एंड मोर क्वेश्चन करो. तो ले देकर आपको क्या करना है, इन एन एग्जाम 20 मार्क्स फ्रॉम पार्ट ए प्लस 12 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी, एंड ओनली 8 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सी. ठीक है, आपका जो हो जाएगा 102 मार्क्स हो जाएंगे. अगर आपका मॉडरेट पेपर आता है, इजी पेपर आएगा, तो ऑब्वियसली 10-20 मार्क्स का अटेम्प्ट जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा. तो मैं व्हेन आई क्वालिफाइड द CSR नेट, मैंने क्या किया था, और इवन दो हुएवर हैज क्वालिफाइड, देखते क्वेश्चन को देख के स्मेल स्मेल होती है क्वेश्चन की. The day you feel like smell, the day you start smelling the questions, no, I see the question, okay, 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 this is like a PYQ, I know the formula, okay, इसमें इंटीग्रल, I know from looking at this question I know इंटीग्रल अटेगा, अटकेगा तो इंटीग्रल अटकेगा, I know that. मुझे देखकर एक स्मेल आ रही है इस क्वेश्चन में से कि फॉर्मूला इज सिंपल बट इसमें इंटीग्रल अटक सकता है. ठीक है, ये मुझे पता है कि डायरेक्ट गेट का PYQ है, नेट का PYQ, मुझे देख के एक स्मेल आ गई है, एक स्मेल, क्योंकि मैंने PYQ लास्ट 5-6 years के आई हैव डन वेरी नाइसली. आई नो द कन्वेंशनल सिलेबस. द डे यू नो द कन्वेंशनल सिलेबस, द क्वेश्चन को देखते ही आपको स्मेल आ जाएगी कि ओके ये PYQ जैसा है, ओके उस साल के जैसा है, कन्वेंशनल नॉलेज के जैसा है. तो आपको देन यू विल रियलाइज कि इन 30 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट सी, 12 क्वेश्चंस तो लगभग कन्वेंशनल ही थे. दे वर डायरेक्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन, 10 तो थे ही. लास्ट पेपर इतना इजी था कि उसमें पार्ट सी में 10 क्वेश्चन तो कन्वेंशनल थे. अगर आपने बेसिक कन्वेंशनल सिलेबस पढ़ा है तो 10 क्वेश्चन कन्वेंशनल थे, मतलब 50 मार्क्स का तो कन्वेंशनल ही था, और एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ा बहुत जोड़ दिया जाए तो 15 से ज्यादा क्वेश्चन इजिली डुएबल थे. कुछ 5 से 10 क्वेश्चन रहे होंगे जो वेरी डिफिकल्ट थे, उनको छोड़ दिया जाए तो, उनको अगर हम ना करें तो अलग बात है. ठीक है, अब अगर आपने अच्छे से मेरी पोलराइजेशन की क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन इजीली होना चाहिए, इजीली होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. ठीक है, बहुत इजीली हुए क्वेश्चन होना चाहिए, राइट. कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एकदम PYQ है. दिस वाज हार्ड, थोड़ा सा हार्ड था इसमें, दिस वाज हार्ड. ठीक है, ये भी शायद आई एम नॉट सीइंग करेक्टली, बट ये भी शायद मुश्किल था. ये बहुत इजी क्वेश्चन. तो यू विल से रियलाइज की कन्वेंशनल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, बट उसके लिए आपको क्या है, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और रिलेट करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली रिलेट करना. पेपर्स को हमेशा खुले, आपकी जो लैपटॉप है या आपके फोन में जो भी है या प्रिंटेबल मटेरियल में 10 पेपर तो हमेशा पड़े रहने चाहिए. 10 पेपर शुड बी ऑलवेज ओपन, 5 नेट पेपर, 5 गेट पेपर, ऑलवेज ओपन.
और हर को जब भी आप देख रहे हो तो क्वेश्चन आप बार बार रीड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल more and more time I'm going up and down, I am again and again saying this scattering question. तो अगर मुझे लास्ट 5 पेपर में हर पेपर में स्कैटरिंग 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 दिख रहा है तो आई विल कंप्लीट माई स्कैटरिंग टॉपिक. हो सकता है मैंने पहले से पढ़ा है, हो सकता है मैंने पहले से नहीं पढ़ा. इफ आई हैव नॉट स्टडीड इट बिफोर आई विल कवर इट, इफ आई स्टडीड इट बिफोर आई विल रिवाइज इट एंड अपडेट इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड. ये सब करने के बाद यू नीड टू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कैसे करेंगे? किसी एक दिन खोला, गेट के लास्ट 5 पेपर्स खोले और लास्ट 5 पेपर में से जो जितने टॉपिक आपने उस दिन तक कर लिए हैं उसके क्वेश्चंस यू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. ठीक है. सो दिस इज दिस इज अ मोर और लेस अ ब्रॉड वे टू क्वालिफाई एनी एग्जाम अंडर द स्काई. सीएसआर नेट में तो ये बहुत इजीली चलता है बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. इन द लास्ट you will I would say that give 5 mock tests of CSIR net. Why and when? 5 mock test आप आज भी देना शुरू कर सकते हैं. ठीक है. बात रही वेन की. वेन मीन्स कि कब देने चाहिए. वेन आई शुड गिव. अभी आज दे दो, आज से शुरू कर सकते हैं. तो मॉक टेस्ट देने का कोई टाइम नहीं होता. मॉक टेस्ट क्यों दिया? व्हाई वी शुड गिव मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट इज नॉट गिवन टू चेक अवर स्कोर्स. मॉक टेस्ट इज गिवन टू मेक अवर बॉडी सिट फॉर 3 आवर्स. 3 आवर के लिए बैठना है, दिमाग चलाना है, उसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए. सो you when was the last time you sat down 3 hours solved 75 क्वेश्चन? लॉन्ग बैक, मतलब जब आपने लास्ट पेपर दिया तभी. सो जस्ट टू मेक योर बॉडी हैबिचुअल, आई वुड से इन द लास्ट मंथ, well बेसिकली आफ्टर दिवाली, वंस योर दिवाली इज ओवर, तो आप ऐसा करिए कि 3-3 आवर बैठिए. आपके मार्क्स बहुत बुरे आ रहे हैं, आने दीजिए, कोई बात नहीं. 3 आवर फिर भी बैठिए. ज्यादा दिमाग चलाइए पार्ट ए पे. बट यूज योर ब्रेन, यूज योर whatever physics you have in your brain, use it, but sit for 3 hours complete. और एटलीस्ट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन, एटलीस्ट मार्क क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये इजी है, ये कन्वेंशनल है, दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज हार्ड. ऐसा करिए. वंस यू डू इट, व्हेन यू सिट फॉर 3 hours फॉर 5 पेपर्स, द डे यू विल गो फॉर एन एग्जाम, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. मतलब अब you will be able to use your 100% of the brain. 100% of the brain. So पेपर को अपने, you navigate your paper according to you. Don't get navigated by the paper. अभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स क्या होता है अभी ऐसा अब मुझे देखिए, अभी ये शर्म वाला क्वेश्चन है ना. दिस इज लाइक अ, ये तो शर्म वाला क्वेश्चन है, राइट? उसमें एनर्जी दिया है एंड बट दे आर आस्किंग इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन मास, मतलब फॉर्मूला है ये तो बस एक, राइट? यू ऑल यू हैव टू अप्लाई इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है. तो ये पीवाई क्यू आपने किए हैं तो हो जाएगा. कुछ भी नहीं है, पीवाई क्यू किया है आपने तो इट विल बी डन. ठीक. सो मोर और लेस ये मेरा पॉइंट है. इफ यू वांट प्रॉब्लम प्रैक्टिस 5-5 साल के पेपर उठाते जाओ. गेट के हो जाए तो जैम, 15 पेपर हो गए. सो 5-5 साल के पेपर उठाओ. जितने ज्यादा पेपर उठाओगे, more and more paper you will pick, more and more your conventional knowledge will get broader and broader. कन्वेंशनल नॉलेज आपकी ब्रॉडर होती जाएगी. देन यू विल नो मोर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, क्वेश्चन उस तरह से भी आ सकता है. मोर एंड मोर पीवाईक्यू यू गेट कस्टम विथ. बेसिकली यही आई फिजिक्स के में बैरियर क्रॉस करने का यही तरीका है. The people who qualify the exam and people who don't qualify the exam are equally good in physics. The only difference is the people who qualify the exam are more aware about the PYQ. They have the memories set up. मुझे इफेक्टिव मास क्वेश्चन, मुझे मुझे क्लिक होगा, मेरे नोट्स में मेरी आंखें जाएंगी, माय आईज विल गो इन माय नोटबुक. ओके, पेज नंबर ऐसा रहेगा और उसमें फॉर्मूला छपा आएगा आंखों के सामने. और ये, और ऐसा क्वेश्चन आई नो जैम में आता है. इफेक्टिव मास वाला क्वेश्चन जो है गेट और जैम बहुत बार पूछ चुका है मुझे. आप एग्जाम पूछ लोगे, मैं आपको वो भी बता. नाउ इन एन एग्जाम, इफ आई एम इन एन एग्जाम आई विल नेवर चूज दिस. मैं देखते ही छोड़ दूंगा. कौन, मतलब कौन करे इसे. मैं देखते ही आई विल लीव दिस क्वेश्चन. मतलब हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं. लैग्रेंजियन बना ला है, इफ आई मेक अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, कुछ लोग करने लग जाएंगे. आप पेपर में अगर ये सब क्वेश्चन करोगे तो फिर आपका क्वालिफाई कैसे होगा? आप क्वालिफाई करना ही नहीं चाह रहे, आप तो क्वेश्चन करने गए हो, आप क्वालिफाई करने गए ही नहीं हो.
आप या तो एग्जाम को क्वालिफाई करने जाते हो या क्वेश्चन करने जाते हो। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब होता है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखा, समय ला गई, पीवाई क्यू, वो वाला किया। क्वेश्चन देखा, 10 स्टेप, दिमाग में 10 स्टेप आ रहे हैं, ये बनाना पड़ेगा, वो पता नहीं होगा, नहीं, छोड़ो छोड़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन आपको में कर सकते हैं, कुछ दिमाग चल रहा होता है, दिमाग को रोकना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आपका दिमाग कुछ आइडिया दे रहा है, योर ब्रेन इज गिविंग यू सम आइडिया एंड यू आर फोर्सफुली स्टॉपिंग इट। फोर्सफुली भी स्टॉप नहीं करना है उसको। उसको फोर्सफुली भी, एक होता है कि चमक गया, जितने ज्यादा पीवाईक्यू करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस में आपका चमकेगा, दैट इज द केस। इफ यू डू मोर पीवाईक्यू, ज्यादा क्वेश्चंस में आपको चमक आएगी। ओह यस। अब जैसे ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है, दिस इज जेई मेंस पीवाई, आपने जेई मेंस नहीं किया होगा, आपने जेई मेंस नहीं किया होगा, मैंने किया है, मैं आई हैव टॉट जेई मेंस, तो मुझे ये देखते ही चमक गया कि यार ये जेई मेंस का पीवाईक्यू जैसा है। मतलब एग्जैक्टली नहीं है, उसके जैसा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी, मतलब जेई मेंस सोचो, पार्ट सी में जेई मेंस पूछ रहा है, इससे इजी वो नेट को क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये लिटरली जेई मेंस का क्वेश्चन, एडवांस भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है वो जैम है, एक ये पता नहीं, एक पीछे वाला ग्रा नहीं, ये शायद यही, आप देख लीजिए, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जैम का एक क्वेश्चन है, 2019 से 25 के बीच में सर्च करिए, ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मिलेगा। तो इससे ज्यादा वो इजी नहीं कर सकता क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस अपना टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है एग्जाम के टाइम में, इफ यू थिंक कि टाइम मैनेज, देखिए आपको, आप मुझे बताइए, 12 क्वेश्चन प्लस 8, 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम चाहिए? 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा, 1 आवर मैक्सिमम। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं जो कि आपको नहीं आते हैं, पहले कभी वैसे क्वेश्चन किए नहीं है, और आप दिमाग लगा रहे हैं एग्जाम में जाकर। एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना होता, एग्जाम में एक्सपीरियंस लगाना होता है, एक्सपीरियंस, दिमाग नहीं, नो नो ब्रेन, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे आता है? पीवाईक्यू आपको दिखा वैसा तो लिखाया, नहीं दिखा वैसा पीवाई आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ा, छोड़ने, इफ यू आर लीविंग द क्वेश्चन 10 सेकेंड्स में लीव हो जाना चाहिए, नहीं आ रहा, आगे आगे, नेक्स्ट। फिजिक्स के तो सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी, 8 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सी, 20 क्वेश्चन, यार कितना टाइम लगेगा 20 करने? सो यू आर टेलिंग मी कि 55 क्वेश्चन जो फिजिक्स के आएंगे उसमें से आपको 20 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे जो कि पीवाईक्यू जैसे होंगे? 20 तो मुझे ही दिख रहे हैं इस पेपर में, 30 to 35 क्वेश्चन तो मैं ही देख पा रहा हूँ जो कि एकदम पीवाईक्यू थे या फिर बेसिक नॉलेज से हो जाते हैं, कभी ना कभी आ रखा है वो, ऐसा वाला क्वेश्चन बस। तो प्रिपरेशन को चैलेंजिंग मत बनाओ, ठीक है, चैलेंजिंग मत बनाओ, कीप इट एज सिंपल एज दैट। और टॉपिक को जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म करना है, और एक चीज हमेशा सीख लो फिजिक्स के अंदर, एक चीज जो है ना, बैरियर क्रॉस करने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डू नॉट गेट स्टक एट मैथ्स। प्रॉब्लम आती है क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में जहां पे आप इंटीग्रल्स पे फंसते हैं, where you get stuck in integrations, where you get stuck in mathematical calculations, or where you get stuck in gamma integral कैसे करते हैं, बीटा functions को कैसे यूज करते हैं, how do you do delta functions का integrations। तो ये सब चीजों में नहीं अटकना है। whenever you are stuck in a question because of the mathematics, do not leave that question, instead learn the mathematics। ठीक है, तो और उसकी अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक है तो उसको भी याद कर। लेट से समटाइम्स क्या होता है कि कुछ इंटीग्रल्स जो है वो उनके शॉर्ट ट्रिक्स होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेक्टेशन एक्स पी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट? अभी इसमें क्या है कि इफ यू सॉल्व यू विल गेट इंटीग्रल्स, बट इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला भी बने हुए हैं कि ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये समथिंग एन प्लस हाफ होता है, एम एच कट ओमेगा, एच कट बाय एम ओमेगा होता है, और ये एम एच कट ओमेगा इंटू एन प्लस हाफ होता है। तो ये याद करके रखो, इफ समथिंग लाइक दिस इज कमिंग अप, जनरलाइज इट। अगर क्वेश्चन आ रहा है एंड यू कैन जनरलाइज द क्वेश्चन, वो भी करके रखो, मतलब थिंक अबाउट कि अगर फर्स्ट एड का दिया, सेकंड का देते तो कैसे करते,
ऐसा हमेशा आस्क कर सकते कि फर्स्ट एड का दिया है, सेकंड का दिया है, तो क्या करते हैं? तो उसके अंदर जनरलाइजेशन कर लो ताकि इट बिकम्स लाइक अ जनरलाइज्ड नोट्स फॉर यू। उन चीजों को याद करो, एक पेज पे लिख के रखो कि एग्जाम से 3 दिन पहले मुझे इनको रटा मार के जाना, आई हैव टू क्रैम इट एंड देन गो टू दैट। ठीक है। एग्जाम मैनेजमेंट का वेरी वेरी क्विकली आई विल टेल यू, 45 minutes फॉर पार्ट ए, देन 1 hour and 15 minutes फॉर पार्ट बी, एंड लास्ट का 1 hour फॉर पार्ट सी। मैं तो बोलूंगा कि 1 hour 1 hour रखो, कि 1 hour एंड 1 hour, एंड लास्ट के 15 मिनट जो आपको मिले वो आपको पार्ट बी या पार्ट सी जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है जो आप कर सकते हो वहां से उठा के कर लो। ठीक है। कब तो एटलीस्ट एक पूरा पेपर का स्कैन ऐसा हो जाना चाहिए। 1 hour 1 hour और 15 मिनट शुड स्टिल बी लेफ्ट, और आपको लगता है कि ओके ये क्वेश्चन ट्राई किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, तो उनको आप लास्ट के 15 मिनट्स में कर लेंगे। इससे ज्यादा ठीक है, क्योंकि यू सी 12 क्वेश्चन करने के लिए 1 hour इज सफिशियंट, 8 क्वेश्चन करने के लिए 1 hour इज सफिशियंट, और लास्ट के 15 मिनट कुछ अगर आप बोनस कर सकते हो तो कर लो। 45 मिनट्स पार्ट ए के लिए दे रहे हैं, यूजुअली लगते नहीं है, वी डू नॉट नीड दिस मच टाइम, बट ओके, यूजुअली 30 to 40 मिनट्स में हो जाता है पार्ट ए। तो पार्ट ए की अलग से आप जो है 5 पेपर्स आपको लगाने हैं। तो ये है आपका पूरा CSIR नेट की सच्चाई। अभी जब आप नेक्स्ट 60 डेज में 30 to 40 टॉपिक्स करेंगे, तो नॉट ओनली आपने 30 to 40 टॉपिक्स किए, बट आपने लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए अपने 30 to 40 टॉपिक्स रेडी कर। Your 30 to 40 topics are ready for even for GATE. Your 30 to 40 topics are ready even for BARC, which will come. Your 30 to 40 topics are coming if you want to do UPSC Geoscientist. तो आप पे 30 to 40 टॉपिक्स जो है उसका जो कन्वेंशनल नॉलेज है वो आपके पास है। तो इट ऑल्सो बिल्ड अप योर लॉन्ग टर्म नॉलेज, नॉट ओनली नेक्स्ट 60 डे प्रिपरेशन। तो सब्जेक्ट वाइज तैयारी नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे, और टॉपिक भी वो जो कि PYQ में बोलेगा कि मुझे करो, बस वो। ठीक है। सो नाउ आई थिंक आई कैन टेक योर क्वेश्चंस। दिस इज हाउ यू कैन क्वालिफाई एज पर द कंटेम्परेरी थिंग। लेस फोकस के साथ कैसे तैयारी की जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी से टॉपिक को शुरू करके कैसे खत्म कर